Pocos lugares hacen honor a su nombre de tal manera como Dartpura. Parece que el dolor ha encontrado un domicilio permanente en Dartpura. Tan verdaderos, tan penetrantes son la pena y el dolor en este pueblo, que aquí en el colegio del pueblo, donde se supondría que las canciones infantiles tendrían que llenar el aire, los niños recitan con total naturalidad una oda colectiva a la muerte. Porque Dartpura se ha convertido desafortunadamente en un pueblo de mujeres que han sufrido y sobrevivido a la muerte de sus maridos, de madres que han perdido hijos jóvenes, mujeres que han perdido a sus maridos, niños que nunca serán abrazados por sus padres, hermanas que han perdido a sus hermanos, chicas que viven como viudas por haber perdido a sus novios. Colgado en montañas altas, casi de surreal e impactante belleza, con las casas y los caminos embarrados casi tocando el cielo, Dartpura está situado prácticamente en la frontera entre la India y Pakistán. Para los habitantes, a través era una realidad diaria hasta que... जो मिल्टन से आई तो मिल्टन से पहले बॉर्डर को आई तो पहले यहाँ चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों को मार डाला. Mientras la araña tejía su tela, los habitantes, como insectos impotentes, fueron atraídos irremediablemente hacia ella. जिधर तकलीफ होती थी ना बहुत ना एक दो के पीछे बढ़ते था ना उसलिए एक बोलता था हमारे साथ आओ दो बोलता था हमारे साथ आओ पीछे उस बिच मारे गए नठे पर तो पिया कजिया औरतां बेचारियों को पिया बच्चियों को पिया जब गुर्बत थी कहते पैसे भी देंगे सामान भी देंगे ये देंगे वो देंगे उन्होंने सोचा पैसे ही मिलने चाहिए थे दफा करो सामान को मोड़ के बच्चों को खिलाएंगे जान नहीं गई तो वो बच्चे बेचारे आज खुदा के बगैर उनको कोई पूछता ही नहीं है कौन उनका. उधर से आया लोग ना जो बड़े बड़े थे उनने उधर से ये उठाया आवाज़ उठा कहते ये गरीब मुसाफिर जो था ये मुसाफिर गरीब मार दिया. 10 थे मिल्टन 20 ऐसे लगे जबरदस्त या मामा की गोली खाते हैं ये दल लेकिन घर में रहते हैं और ये बेचारे सभी मुए थे 5 6 6 8 8 बच्चे आ घर में ना कोई जरिया ना कोई रिलीफ ना कुछ ना काम चले. Como resultado, hoy, tras 14 años, lo que queda en Dartpura es una masa de mujeres furiosas, traicionadas, con toda su rabia, rencor y frustración apenas disimulados. Los hombres están claramente ausentes. जिंदगी करा लिया से वो शहीद हो गए बच्चे शहीद हो गए 12 12 14 14 सालों का बच्चा शहीद हो गया तो इतना मुझ बेवन 100 तो भाई इतना बेवन तारीख उठी इस तारीख के बिल्कुल इंसान खत्म ही हो गया. 400 परिवार होंगे जिनको ये मिल्टन सी से ये असर पड़ गया. देखिए जब सिर का सहारा नहीं कुछ नहीं है आज मजदूरी वाले जो उनकी पेश नहीं या जो तनख्वाह लेते हैं 8-8 हज़ार 10 हज़ार वो भी रोते हैं जिसको अलावा आज कोई सहारा नहीं कुछ जिचर जान है इसे चलो मैं हाथ की मजदूरी करके 5 बच्चे पालती हूँ जब जिस जान नहीं हुई तो फिर जिस तक जान इचर करूँगी कुछ ना कुछ. Dartpura, debido a su ubicación, se encontró sin querer a sí mismo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Atrapado por el fuego cruzado entre los que profesaban que su violencia tenía una ideología y aquellos cuyo deber consistía en su eliminación. छोटे मारे गए ना बड़े ने बातें किए छोटे मारे गए. Mientras la violencia desafortunadamente siempre busca una ideología para justificar sus excesos y depravación, para esas mujeres de Dartpura, su agonía y dolor son la única realidad que conocen y entienden. Viven siguiendo la rutina cotidiana de la vida, pero marcada por la tristeza, también por la vida.
Las líneas invisibles que dividen y redibujan las fronteras son a menudo trazadas por gente que nunca ha caminado por ellas. O ha jugado en campos contiguos donde crecen los mismos cultivos cada vez que cambian las estaciones. Pero para los que sí viven alrededor de esas líneas invisibles, se convierten en una realidad dolorosa, dejándoles pensar en qué parte del bosque, en qué árbol deben pararse para no cruzar estas líneas invisibles. हमको यह पता नहीं था हिंदुस्तान डिवाइड होगा, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि लीडरों को भी पता नहीं था ये 2 मुल्क बनेंगे और 2 मुल्क बनने के बाद फिर पासपोर्ट बनेगा, फिर वीज़ा बने, ये तस्वुर ही नहीं था, कहीं आज भी मालूम नहीं लोगों को, अभी तक भी। Esas líneas son verdaderas y desafortunadamente para Mustafa eran una realidad que descubrió de forma traumática, tras ser metido en prisión por haber cruzado una de esas líneas. मैं यहाँ से गया, इधर रेस्ट किया मुझको, वहाँ पे मुझे 7 दिन उन्होंने जो है रिमांड रखा है, करंट भी लगाए हैं, लटका के मारा है, ऐसे मारा है कि तुम जो जासूस हो, तुम जो है आर्मी से मिल के आए। Durante 7 años en cárceles pakistaníes soñó con regresar a casa, experimentar de nuevo las imágenes, olores y sonidos de la niñez. Irónicamente, los duros confines de una cárcel pakistaní redefinieron sus raíces indias. हम इंडियन वहाँ पे रहते थे एक कमरे में 60 बंदा, हमारे कभी हमारे साथ हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान भी थे, 2-4 ईसाई भी थे हमारे साथ, लेकिन हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन पाकिस्तानियों का हर दिन झगड़ा होना कि जैसे बकरे को ज़बह करते हैं वैसे वो एक दूसरे को मार रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो गए कि हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ पे इतनी कौमें रहती हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में कितनी शांति है, कितना अमन है, और ये एक ही कौम रहती है, एक ही मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो ये आपस में इतनी नफरतें हैं। 21 años es la edad en que la mayoría de los jóvenes se consideran a sí mismos libres e independientes. Pero para Mustafa, los 21 fueron la edad cuando fue metido en la cárcel. Una prisión que le encadenó físicamente, rompió su espíritu y le hizo cuestionar su entorno. पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है, तो इनमें इतनी ज़रा खुदा का खौफ ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है, कोई रहम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर सर मैं वहाँ पे मेरा दिमाग एकदम अपसेट हो गया और मैंने जो है इस्लाम छोड़ दिया। मैंने कहा मैं क्रिश्चियन बनूंगा और मैं वहाँ पे क्रिश्चियन बन गया। प्रेशर से तो मैं नहीं बना हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने देखा है मुझे उन लोगों से इतनी नफरत हो गई है और इतना दिल बुझ गया है कि मैं अपने आप को जो है खुद जब मैंने देखा कि इतने मैं वो जो है ना मतलब एक अपने आप को मुसलमान कहलाने मैं भी मुसलमान था, मुझे शर्म आ गई। ये चीज़ें जो मैंने पाकिस्तान में देखी हैं मैंने नहीं देखी, ये जो कश्मीर में मैंने कभी सुना भी नहीं इनके बारे में। ये जो बदफेली है, हम जिन्स प्रस्ती जिसको कहते हैं, होमोसेक्सुअल जो है, वो मैंने जाकर वहाँ जब सुना मैं हैरान रह गया कि ये दाढ़ियाँ रखे हुए लोग वो कह रहे हैं एक दूसरे को ऐसे ऐसी, वो हकीकत बात है। और कत्ल इतना वहाँ पे बंदा मारना एक मामूली सी बात है, वो अपने आप को बड़ा पहलवान कहलाते हैं, बहुत कहते हैं कि हमने ये बंदा मार दिया, इंसान मार दिया। जबकि कश्मीर में ये पुरानी यहाँ मशहूर बात है कि ये कहते हैं आसमान लाल होगा तो कहीं कत्ल हो गया है, यहाँ मैंने कभी कत्ल का नाम सुना ही नहीं। Sus desesperadas memorias son tan imborrables para él como la miseria de los que dejó allí y que están todavía encarcelados. मैं इधर बैठा हूँ लेकिन उनके चेहरे जो हैं मेरी आंखों में घूम रहे हैं, मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि वो बेचारे कोई 16 साल से पढ़ा है, कोई 18 साल से पढ़ा है। उनको जब पूछते हैं वो कहते हैं कि आप सुप्रीटेंडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं सर हमारी रही का कुछ करें, तो सुप्रीटेंडेंट कहता है कि आपको इंडिया गवर्नमेंट नहीं ले रही है, वो उनके पास ही पाना होता है। अब उन्हें क्या पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्या कह रहा है। लेकिन वहाँ पे इंडियन औरतें हैं, उनमें से 2 हमने सुना है कि वो पागल हैं, 2 औरतें पागल हो गई हैं। Destrozado en cuerpo y alma por haber vivido entre la peor de las bestialidades, Mustafa agradece a Dios haberle dado una nueva vida y tiene solo un deseo. सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँगा, मैं तो मेरी एक और मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। यही 2 मकसद मैं लेकर आया हूँ। जब मैंने अल्लाह से, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ये मुझे दूसरा जन्म मिला है। Hoy Mustafa se siente esperanzado y quiere soñar de nuevo. Ojalá fuera posible dar una nueva oportunidad a todo el resto, aun pudriéndose al otro lado de esas líneas, de esperar y soñar.
Las elecciones en Jammu y Cachemira son iguales que en cualquier otra parte de la India, pintorescas, llenas de gente, ruidosas. Mientras que hacer campaña es un trabajo serio para casi todos, para otros es algo entretenido, que les garantiza un público atento y un lugar bajo el sol, aunque sea breve. Al ganar impulso la campaña, las reuniones en las esquinas se convierten en foros para arreglar cuentas. Las multitudes vociferantes se ponen de parte de sus candidatos, mientras abuchean a los adversarios. Sin embargo, algunos solamente escuchan tranquilamente. Mujeres, niños, hombres, jóvenes y viejos. Las elecciones a la más grande democracia del mundo son literalmente para todos. Cualquier espacio que permita una visión del cuadrilátero de los candidatos y de las payasadas de sus partidarios de esta gran tamasha india es inmediatamente ocupado. La comodidad y la seguridad parecen por el momento de poca importancia. Pero desafortunadamente durante esas elecciones y también las de los años recientes, no fueron únicamente los candidatos los que intentaron captar la atención. Quizás se vea esta celebración alegre de la democracia como la máxima amenaza. Mentes corruptas actúan cruelmente y tratan de cortarla de raíz. E intentan destruir la participación de la gente y aterrorizarlos hasta hacerles callar. Donde hace unos momentos el ruido de eslóganes y charlas alegres había llenado el aire, ahora lo desgarran lamentos, sirenas y gemidos. Cuerpos mutilados y mentes extraviadas. Los ojos distraídos de los inocentes. Se preguntan por qué se les aterroriza en su propia tierra. Y eso por extranjeros que no saben nada de sus tradiciones democráticas y que la respetan aún menos. Sus lágrimas calladas de angustia son insuficientes para limpiar el color de la sangre. Aún así se niegan a ser intimidados y silenciados por el miedo. Vienen desafiando todas las amenazas en grandes muchedumbres, de pie en largas colas por horas, esperando con paciencia para votar, porque creen en la democracia. और इतना ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा था और मगर लोग निकले, चाहे कम निकले ज़्यादा निकले तो वोट देने के लिए। वो तो सबसे खूबसूरत याद है, मरने में गोलियां खाने में मगर गए। और वोट की कदर जो उस वक़्त जवाहरलाल को कहते थे कि लोग अनपढ़ हैं, इन्हें दे दे वन मैन वन वोट, उसकी अब हमें कदर आती। Como en cualquier otra parte del país, cada persona tiene sus razones para votar. امن امانت سیوٚد بیٚیہِ گژھِ یہِ ہسا اَسہِ نہٕ چھُ خوف کٲنٛسہِ ہُنٛد نہ چھُ کینٛہہ أسۍ چھِ یِمن ووٹن ترٛاوان ترقی گژھِ گژھٕنۍ بے روزگٲری چھِ غریٖب چھِ لوٗکھ امامت بنہِ بیٚیہِ کیٛاہ فٲیدٕ دیُن نتہٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ Pero lo común a todos es la creencia de que sus votos pueden decidir su futuro. हम खुद वोट डालने आए हैं, ना ही दहशत ना ही खौफ, कुछ नहीं, अमन तरक्की के लिए। इसलिए आए वोट डालने के लिए हैं कि हमारा ये इरादा है कि हमारी ज़िंदगी किस मकसद में जाएंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम वोट डालने आ रहे हैं सब, बस हमारा ये मकसद है कि हम किसी तरक्की पे पहुँचे। मगर हम भी इसलिए आए हैं कि हमें फिर इंसाफ, हमें 12 सालों से सिर्फ हमने यही देखा है और कुछ नहीं, इसलिए ये वोट डाला है कि हमें इंसाफ चाहिए। Para que el terror no pueda lograr tanto. Para que la inocencia no se corrompa. Hasta que el miedo se convierta en intrepidez. Para que cuando la mayoría silenciosa decida con dignidad corregir a los malos, las armas del terror no consigan tanto.
शेर कश्मीर का क्या इशारा। हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद। En octubre de 1947, todo hombre, mujer o niño en Jammu y Cachemira se convirtió en un soldado. It was a spontaneous, वो तो लोगों को ऐसा उस वक्त था जुनून कि मैं बता नहीं सकती हूँ। No les quedaba otra opción. Tenían que luchar porque se les estaba atacando. जोश तो यही था ना भाई कि हमने जिंदा रहना है। We have to live. That was the जोश। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया है, या अचानक एक लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे थे, सारे एक होकर लड़े। Esa unidad, que trasciende las diferencias religiosas, fue el detalle esencial que había sido pasado por alto por los invasores y los poderes que los enviaron. En realidad, parecían ignorar el hecho de que, durante siglos, en Cachemira fueron los maestros pundit hindúes los que enseñaron el Corán a los niños musulmanes. ¿Cómo podían entonces tomar la religión como base para redefinir las fronteras? तारीखी वाक़ा है, पाकिस्तान बन गया। हमें यह नहीं दुख है कि उन्होंने हमारी तहरीक की मुखालफत की। हम सोच समझ कर इलाका फैसला करेंगे। उससे पहले ये हुआ कि इन्होंने भेजा सादिक साहब को कि आप जाइए। वो गए वहाँ, तो वो कहते हैं हम कोई नहीं, हमारे तो कश्मीर है, हमारे तो हमारे हाथ में है, जेब में है। Como medida drástica para forzar una decisión, fueron enviados invasores cabalís. The Pakistan, instead of transit, it started, they came raiders, and which they called so-called raiders, and afterwards they said that the army battalions have run away. Vinieron los invasores y con ellos el pillaje, la violencia y los incendios premeditados. La violación, la muerte y la destrucción fueron sus tarjetas de visita. क्योंकि उन्होंने नारा सी सिख दा सर, मुसलमान दा घर ते हिंदू दा ज़र। तो उन्होंने यहाँ गलत तरीका अपनाया और माँ बहन का कोई तमीज़ नहीं रखा उन्होंने। तो ये वजह थी कि यहाँ के लोगों को फिर नफरत हो गई। लाशें देखी हमने, लोगों को मरे हुए देखा, जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो भी एक बड़ी दहशत थी। Tal crudeza solo hizo que la gente decidiera proteger aún más su identidad y vivir con honor. फिर उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक वॉलंटियर फौज बढ़ाई, जिन्हें जम्मू कश्मीर मलेशिया कहते सन। It was the heart of the freedom movement. तो उन्होंने फिर आके वहाँ, जिसको हम लाल चौक आपने देखा होगा, और उन्होंने नौजवानों को शेख अब्दुल्ला ने पुकारा। I was called on the stage and told कि भाई get your volunteers etc. Everybody knew there was no question of payment. They were volunteers. At that time we had no weapons, then we borrowed some. We had that guerrilla sort of a thing, because the people were with us. They used to inform which he is there. So we used to go and catch them. Las mujeres participaron tanto más que los hombres en esta lucha. औरतें निकलती थी, सारी कश्मीरी गरीब औरतें, खाने को रोटी मंगवाती थी, लड़कियां और बच्चे बंदूक लकड़ी की बना के बंदूकें चलते, कदम कदम बढ़ेंगे हम, महाज पे लड़ेंगे हम। और दूसरे भी इसी तरह से करके जाते थे। नौजवान गए महाज पे लड़ने के लिए, यही कहते, जिन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं थी, कश्मीरियों को बंदूक देते ही नहीं थे बस। और वो बच्चे जाके आए भी नहीं कभी वापस, मगर जाने दे दी उन्होंने। इतने मरे लोग उस वक्त नौजवान जा। Finalmente vino la ayuda, cuando la aceptación fue firmada y llegó el ejército indio a defender lo que ya era una parte integral de la India soberana. जब एक्सेशन हुआ तो फौज ने यहाँ लैंड किया। मैं यहाँ लाल चौक में था जब हिंदुस्तान की पहली आर्मर्ड कार आ गई, लोगों ने फूल बरसाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद किया। El ejército tuvo éxito, contra todo pronóstico, por el apoyo incondicional y abrumador que recibió de toda la gente en todas partes, especialmente de la milicia del pueblo. No es de extrañarse entonces que el regimiento de infantería ligera de Jammu y Cachemira, del ejército indio, surgiera de esa fuerza de voluntarios civiles. Herederos orgullosos de una herencia de no solo valor, sino sobre todo de los ideales seculares de la India.
Cachemira es Parvati. Así dijo el dios Krishna en la Nilmata Puran. Y quizás por eso, la memoria colectiva, historia cultural y el folclore nos habla de las Kuldevis, las Matrikas, las Shaktis. De hecho, de todas las miles manifestaciones de la diosa materna que se encuentran en los arroyos, los ríos claros y montañas altas de esta tierra a criar y proteger. Sea mito o leyenda, la verdad es también que siempre y aun en sus horas más oscuras, las mujeres de Cachemira han sido su norte, criando y protegiendo. इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरा सर जो है ना वो नीचा है कश्मीरी औरतों के। इतना सफ़र वो करती हैं लेकिन औरतें फिर भी सिर ऊंचा करके चलती हैं, फिर भी वो बड़ी अच्छी हर के साथ। दे आर नॉट कम्युनल, दे आर नॉट फंडामेंटलिस्ट। Tradicionalmente por siglos, social y culturalmente, las mujeres de Cachemira se han criado en libertad e igualdad. हमारे घर में तो पर्दा है ही नहीं था और गरीब जो औरतें थी मुसलमान उनमें पर्दा ही नहीं था। कश्मीर में पर्दा नहीं था। As a child, I never remember seeing a woman with a covered face. Lo que hizo que, cuando estalló la militancia, se les hiciera aún más difícil aceptar los decretos de extranjeros que exigían la invisibilidad y sumisión ciega de las mujeres. हमारे इस्लाम में भी ये है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी बंदिश है कि हमें बुर्के में रहना नहीं। टाइम की जो डिमांड है हमें उसके साथ साथ भी चलना है। हाँ, अपने जो अपना ये है कल्चर वगैरह उसका भी ख्याल रखना है हमें, बेशक वो ख्याल रखना है। Desacataron esos decretos tanto como les fue posible, trabajando para mantener a sus hijos, familias y a la sociedad. इसमें कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदगी उन चीज़ों से है कि किसी के आगे हाथ फैला उसमें शर्मिंदगी है, किसी के आगे झुक जाओ वो शर्मिंदगी है। मुझे नहीं लगता अपने पैरों पे खड़े होके खुद काम करना इसमें कोई शर्मिंदगी है, चाहे फिर लोग कुछ भी बोले। ये बातें जो लोग कहते आ रहे हैं ये तो कहते आ भी रहे हैं और कहते रहेंगे। ये ज़रूरी है कि औरतें आज आएँ, बिजनेस में, ट्रेड में आएँ और अपने आप को मनवाएं जिस तरह उन्होंने और फील्ड्स में मनवाया है। Tomando valientemente una posición contra todo pronóstico, aunque pertenecieran a una minoría minúscula. यही चाह रहे हैं कि हमारा जो पुराना भाईचारा है वो कायम रहे। Mariposas de hierro es como un extranjero describió a las mujeres indias, suaves, delicadas y hermosas por fuera, pero con acero por dentro, cuando cuidan, protegen y se sostienen a sí mismas y a sus familias. और इस वक्त टाइम की डिमांड है कि हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ एक लेवल पे आ जाए, हम पीछे नहीं रहें, दूसरे कौमों की तरह हम भी आगे जाएं। चाहे मुझे कोई इसके लिए इजाज़त ना दे या ना दे, लेकिन मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ कि मैं किसी हद तक किसी को हेल्प कर रही हूँ। मैं शायद मुझे अल्लाह ताला ने ये सलाह दी है कि अपने रोज़गार के साथ साथ मैं दूसरों का रोज़गार भी ढूंढ सकती हूँ या दे सकती हूँ। En todas partes de la India las mujeres hacen honor a su reputación. Las mujeres de Cachemira no son ninguna excepción.
आने से पहले ही दहशत फैली थी। पहली दफ़ा देखा कि इंसान किस कदर, किस हद तक जालिम हो सकता है। Se dice que el tiempo todo lo cura, que borra las memorias hasta que se convierten en meros susurros de olvidados murmullos. Pero para todos los que fueron testigos de los horrores de las invasiones cabalís en Baramulla en 1947, aun después de 57 años, la bestialidad y la brutalidad de sus agresores permanecen grabadas en sus mentes. पता ही नहीं लगा तब तक जब तक गोलियों का भूचाल हो गया। और उन्होंने लूट खसुट का मतलब कोई मतलब इम्तियाज ही नहीं रखा। I was walking through the streets. I saw green flags you see hanging and everybody very you see stunned, dumb. उन्होंने ये तमीज़ नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। उन्होंने एक जैसा बर्ताव किया। जहाँ आप देखते धुआं था, कहीं लाशें पड़ी हुई थी कि मेरी याद मैं उसी दौरान दूसरे या तीसरे दिन यहाँ मिशन हॉस्पिटल में चला गया। लाशें गिरी हुई। Irónicamente, fue el mismo hospital misionero donde la gente se había refugiado creyendo que no atacarían a un hospital misionero europeo. Estaban equivocados, muy equivocados. Then suddenly they landed there. Everywhere there was firing, all around the place, just firing indiscriminately in the air, at people, and as we were in that big ward there. Sidney Smith, corresponsal del Sunday Express de Londres, entre otros corresponsables extranjeros, hizo posible que los detalles espantosos de este repugnante acontecimiento llegaran a Europa y al resto del mundo. Pero este pozo quedó como un testigo mudo, mientras los cuerpos de mujeres jóvenes violadas, incluso los de las monjas que fueron ultrajadas, uno tras otro, fueron arrojados a sus profundidades. Como las noticias de la brutalidad del enemigo siguieron propagándose, las familias que tenían hijas preferían matarlas a dejarlas caer en manos del enemigo. अपनी नौजवान लड़कियों को सैकड़ों को कत्ल किया। हमने ये गैरत हमें इजाज़त नहीं देता कि हमारी लड़कियों को कोई छीन कर ले जाए। Una vez que se formalizó la aceptación y el ejército indio hubo llegado, la gente regresó para rehacer lo que quedaba de sus vidas. पिंड उजड़िया सी, मकान सड़ गए सन, गुरुद्वारे दी बिल्डिंगां सड़ गईयां सन, खंडरात बने सन, सारे पासे मुसलमानों दे घर भी साडे घर भी। लाशां दे कोई पुराने खोखे पे सन, टांचे पे सन, मास सड़ गल गया सी। वो पछाण नहीं सी हुंदा कि ये मुसलमान दी लाश है या सिख दी लाश है। Baramulla, una animada ciudad con una población de 14.000 habitantes, quedó reducida a escombros, con solo unas 1000 personas asustadas y marcadas por sus experiencias. और जब मतलब रेड आ गया ना, समझो बारामूला समझो जितना पास पर था उतना ही बैक चला। Según la leyenda, Baramulla o Barmul fue creada del rabo del dios Vishnu en su vara avatar. Mientras que aquella verdad se ha perdido en el tiempo, es un hecho que Baramulla es el asentamiento urbano cosmopolitano más antiguo y próspero del valle. This was the first town of the valley. So everything that came in, visitors, everybody who came, they came to Baramulla. Desafortunadamente, tuvo que pagar cara a aquella prosperidad. वो बारामूला में ठहरे लूट मार करने के लिए, सिखों की जायदाद लूटने, हिंदू की जायदाद, मुसलमानों की जायदाद। 10-12 दिन अगर वो इंतज़ार नहीं करते, श्रीनगर उनके कब्जे में हो जाता, एयरपोर्ट उनके कब्जे में होता। En solo 4 días de terror, la primera ciudad del valle se convirtió en su última ciudad.
Fue en 1988. Todos los hoteles, albergues, casas flotantes estaban llenos. El lago Dal bullía. Casi 1 millón de personas estaban de vacaciones en Jammu y Cachemira. Desafortunadamente, en 1989, de repente llegó a la región otro tipo de turista, no invitado y no grato. Estalló la militancia y como las cosas empeoraron, con el tiempo los turistas presentes huyeron. Se empañó el Dal. Las ijaras se quedaron en colas silenciosas. Los hanjis o barqueros esperaban desesperadamente que alguien llegara. Del mismo modo, cuando regresó la normalidad, fue acompañada por la paz, y los turistas volvieron, al principio poco a poco, y luego a manadas. So lovely. I don't know. It's like a dream. Militaries are present everywhere. Yeah, you see them, but very calm, very gentle. Actually, always smiling towards women anyway. And I must say, I feel very safe. Un indicador definitivo fue la vuelta de los equipos de filmación de cine indio para rodar en el valle. Un estímulo tanto para el turismo como para la economía, mostrando otra vez que la paz y el desarrollo van de la mano. Since last couple of years, things are getting better, and people feel very optimistic about the betterment of this place now. We have seen private sector investment coming in. I would say after 12 years, 13 years, after militancy you can say, private say, yeah, they have started coming in. We have like LG, we have Pepsi, we have so many people coming in. There are some textile units coming up. Then KK Birla, they are expanding their unit. Mientras que la agricultura y la horticultura han sido tradicionalmente el pilar de la economía de la región, el turismo ocupa el segundo lugar y en las regiones urbanas el primero, proporcionando empleo directa e indirectamente a miles de personas. El otro sector importante que contribuye a la economía del Estado es el sector de la artesanía, que también está relacionado directamente con el turismo. As long as Kashmir is concerned, Kashmir ki pehchan to Kashmir it by itself. It is by itself a pehchan. Then handicrafts definitely, because there are handicrafts made in other parts of the country also, but those are entirely different. Like paper mache, for example, I'll tell you, they are not made, that is not made anywhere else in India. Carpets are made now in Delhi, Jaipur, Badaui, Agra and other places. But again, those and our carpets are entirely different. Como el turismo disminuía y el mercado se reducía, la explotación de los artesanos a manos de los intermediarios aumentó. उनको जो काम है वो भी कम हो गया, इसलिए ज़रूरत इस बात की है वही आर्टिजन्स यूनाइट होके, ऑर्गेनाइज होके खुद ही काम स्टार्ट करें, इनिशिएटिव लें और अपना मार्केट खुद देखें, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा है। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। Los artesanos entonces empezaron a viajar para vender sus productos. These actual manufacturers, they are producing and selling directly to the consumers. They go out during winter and sell their product. So their remuneration has improved. Pero quizás una de las razones más importantes de este cambio económico fuera que इनके भी इरादे नहीं टूटे और हमारे भी नहीं इरादे, लेकिन हमने काम रोका नहीं, करते रहे। La paz para el desarrollo y el desarrollo para la paz son las únicas formas de asegurar que haya una sonrisa en todas las caras.
En los años 46 y 47, para cada indio en el subcontinente, había solo una preocupación dominante, la independencia, y el pueblo de Cachemira no fue ninguna excepción. वहाँ भी कहते थे सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख लो अब जोर कितना खंजरे बाजू में है। यहाँ भी हम नारे लगाते थे। Los líderes nacionales eran muy conocidos y sus visitas impacientemente esperadas. पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी रोड से आया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसी रोड से आया, महात्मा गांधी इसी रोड से हमने उसको रिसेप्शन किया। Ideales y sueños compartidos. Una visión común para una sociedad justa e igualitaria unió no solamente a los líderes, sino también al pueblo. इक्वालिटी हम चाहते हैं, हम सेकुलर हैं, हमारे सब के लिए हमें ये है, डेमोक्रेसी है। El laicismo fue el factor decisivo, porque en esta tierra de Nun Rishi y Lal Det, el respeto hacia las creencias religiosas de cada persona y los valores compartidos eran a fin de cuentas dominantes. Because we believe that whether it's a temple or whether it's a mosque or whether it is a place of ziyarat, God is everywhere. There is one God. You may call him anything you like. I may call him anything I like. क्योंकि हमारे कल्चर में हिंदुइज्म हमारी विरासत है। कश्मीर हमेशा से सेकुलर रहा है। Evidentemente, pues, la idea de que la religión pueda ser alguna vez la base para la división fue inadmisible y extraña para la mayoría. Two nation theory के खिलाफ था। Además, los que apoyaban tal división fueron mal recibidos. मोहम्मद अली जना यहाँ श्रीनगर आया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास को अटेंड करने के लिए। उसमें उन्होंने कहा था शेख अब्दुल्ला के साथ मत दे दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुराई की। फिर वो जब उसने फिर शेख साहब ने उसके खिलाफ जलसे किए यहाँ और गवर्नमेंट मजबूर हो गई, जना को नोटिस दिया विदिन 24 आवर्स वादी को छोड़ दो। आया था वो तो लोग खिलाफ ही हुए बड़े, वो तो कईयों ने तो बड़ी ज्यादती की, कोई जूतों के की, वो सुना मैंने देखा नहीं मगर ये अखबारों वगैरह में पढ़ा। La historia estaba en gestación y vino la independencia, pero a la vez vino la partición y el mapa de la India cambió para siempre. Una realidad que tuvo impacto sobre millones de vidas, pero irónicamente incomprensible a la mayoría de ellos. When the partition was there, we never expected that there would be such turmoil, you see. ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक देश में दो देश बन गए नहीं, हमको यह पता नहीं था हिंदुस्तान डिवाइड होगा, इसके क्या रिपरकशन होंगे। Pero muy pronto se empezaron a notar las repercusiones. La primera fue el acuerdo de moratoria que Maharaja Hari Singh había firmado con Pakistán. A cambio, ellos impusieron un bloqueo económico. See, the Pakistan made blockade. Nothing was available here. And it was the great sacrifice of the Kashmiri people. क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान के साथ महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, गाड़ियाँ चलती नहीं थी, नमक नहीं था, कोई है ही नहीं थी, फूड की कोई चीज़ें नहीं, मगर लोगों ने जबरदस्त किया। वो रास्ते बंद किए थे, हमें नमक की ज़्यादा दिक्कत आ गई। ऐसा मुश्किल you cannot imagine. La gente, sin embargo, se mantuvo firme, desesperados pero desafiantes. Por eso la presión fue aumentada. ये खबर आई कि ये कबायली पहुंच गए हैं और वहाँ बारामूला तक आ गए। उस दिन दशहरे का दरबार था। But you see, the Pakistan, instead of standing, it started, they came raiders and और पीछे उनकी पाकिस्तान की फौजें थी, आगे कबायली उन्होंने रखे। हमला वालों का रुख था कि वो चाहते थे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ दें। Esa exhibición gratuita de terror solo logró fortalecer la resolución de la gente a distanciarse de un sistema de valores que creía en utilizar la violencia y brutalidad para imponer decisiones. पाकिस्तान के खिलाफ एक वन एंड ऑल कश्मीरी थोड़े से थे, मसलन उधर की शहर की तरफ जो कोई समझते थे वेस्टेड इंटरेस्ट वो पहले से ही उनको था, बाकी तो आम कश्मीरी जो था दे वर विद इंडिया। Accession was signed. He signed and he said sent the paper before these troops arrived. कश्मीर जो है वो रहेगा और हिंदुस्तान के साथ रहेगा, किसी और मुल्क के साथ नहीं रहेगा। पाकिस्तान की हालत को देखकर कहते हैं शेख साहब का फैसला दुरुस्त था।
सारे जेह्ड़े इंसान एक है कि एक पिंड दे नहीं, एक मुल्क दे नहीं, एक देश दे नहीं, सारा इंसान जेह्ड़ा कायनात है, मानस की ज़ात सभी एक ही पहचान दो। Pluralidad de pensamiento y acción, un espacio para todos y una creencia perdurable, que toda la humanidad es una. Esa es la idea final de India. Había una vez, hace poco tiempo, en que los ríos eran de una claridad prístina y los peces saltaban de sus aguas, probablemente para echar un vistazo al mundo de afuera. Bosques frondosos dejaban al sol y las nubes echar ojeadas a través de su follaje. Los animales andaban libremente en busca de alimento y pareja. Y luego vino otra especie a estos bosques. Su espeso manto fue el escondite perfecto para la gente que vino con armas, a matar, a herir, a destruir. Bosques que necesitaron siglos para crecer fueron destruidos en un momento por la locura humana y la avaricia. जो मैंने पिछले 15 साल से देखा है, इसमें बहुत जैसे मिलिटेंसी से भी बहुत मुतासिर हुआ जंगल। हालात खराब है क्या? ये काट लिया, जब वो दहशतगर्दी होगी तो लोगों ने काट लिया। La falta de normalidad también significaba una bajada en el turismo, reduciendo las ya pocas oportunidades de empleo, aumentando el énfasis sobre los bosques para sobrevivir. आवाम के पास इस वक्त गुजारा कुछ नहीं, यहाँ भूखा मरता है लोग, इस वजह से जंगल चोरी भी जाता है और इसी वजह से कोई नुकसान भी होता रहता है। Eso no fue todo. La destrucción vino de varias maneras. Cuando el santuario de 700 años de Charar-e-Sharif fue destruido el 11 de mayo de 1995 por militares extranjeros, el incendio también destruyó la ciudad, construida casi completamente de madera. 1.400 casas se quemaron con el santuario. 1.400 casas tuvieron que ser reconstruidas, para lo que se necesitaban más de 250.000 pies cúbicos de leña. Miles de árboles fueron cortados por culpa del capricho irresponsable de una mente depravada. Irónicamente, Charar-e-Sharif es el último lugar de reposo de Sheikh Nuruddin, o Nun Rishi, el santo patrono de Cachemira, y un gran conservacionista que enseñó a sus discípulos. You will get your bread only if your forest is lost. La destrucción irresponsable de sus recursos valiosos, sin embargo, hizo a los habitantes más conscientes de sus reducidos bosques. जंगल जब होगा तो हमें सादत मिलेगी इससे, जंगल से हमें मिलता है सब सहारा, जब जंगल नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा, ज़मीन में कुछ नहीं बनेगा। सब रिश्ता जंगल से ही है। जैसे हमको लकड़ी ज़रूरत है इधर कश्मीर में, हम जलाने के लिए, घर बनाने के लिए भी, मकान बनाने के लिए, सब के लिए लकड़ी चाहिए।
किस्म किस्म की लकड़ी। Pero para ellos los bosques son importantes, no solo porque satisfacen todas sus necesidades, leña, combustibles, pasto, agua, sino también porque los bosques satisfacen una necesidad emocional. Para ellos, un mundo sin bosques sería una parodia. जंगल में बैठकर हमें वैसा चैन लग रहा है जैसा माँ अपने बच्चों के साथ किसी जगह बैठकर खाना खाती है। सुकून मिलता है, जी भर के सुकून मिलता है। Quizás sea esa la razón por la que están trabajando tanto para regenerar sus bosques. En el pueblo de Kudluz, cerca de Yusmark, 1.300.000 árboles han sido plantados por los aldeanos como esfuerzo voluntario con la orientación y ayuda del Departamento de Bosques. ये होंगे 20 लाख बूटे। 20 लाख ये हमें इस फॉरेस्टर साहब की सादत से ये बूटे हमने तैयार किए और उनकी रखवाली की। तो मैंने इस तरह इनको समझाया, ये तो चेयरमैन साहब हमारे हैं, तो इन्होंने खुद भी ये समझ लिया कि ये तो हमारे बच्चों की फ़ायदे के लिए है। जंगल काटना तो ज़रूरी नहीं है, अगर तो जंगल बन जाए तो हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदा रहेगा। इसीलिए उन्होंने समझा और हमारे कॉपरेशन दे दी और हमने इनको तैयार कर दिया। Hoy, mientras miran a sus árboles crecer, se sienten justificadamente orgullosos. इतने जंगल काटे गए, नहीं तो कहाँ कौन काटेगा? आज क्यों नहीं कोई काटता सर? क्यों नहीं काटते? आज बिल्कुल, आज तो ये भी स्ट्रांग है, हम तो खुद भी स्ट्रांग हैं। अब तो नहीं यहाँ के लोग गड़बड़ होने देते। Estos aldeanos han demostrado al mundo que solo hay una tierra, que no poseemos, sino que compartimos con todos los otros seres vivos, y que hacer daño o curar está enteramente en nuestras manos.